Good morning, students. In this video, I am going to discuss the first scheduling algorithm, that is FCFS scheduling algorithm. Scheduling algorithm is a very important topic of operating system, keeping in mind your university examinations or any other competition examination, either it's GATE or NET. So this is the very first scheduling algorithm, first come first serve. First come फर्स्ट सर्व. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. सो द डिस्कशन इज व्हाट इज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. एज द डिक्शनरी मीनिंग इज द वे टू शेड्यूल processes. That means in a ready queue there are number of processes residing in a ready queue for its waiting for the availability of CPU. The scheduling algorithm decides which process will get CPU first. That is the duty of scheduling algorithm कि किस process को जो है हम पहले CPU allocate होगा. तो this is the first scheduling algorithm, as the name is saying first come first serve. That means a job which entered first will be entertained first. Here I have one classical example of first come first serve scheduling algorithm. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, this is a ticket window. A person who is a librarian who is issuing or entertaining the person standing in this queue. These are 4 persons standing in the queue. ये टिकट काउंटर पे सबसे पहले उसको ही सर्व करेगा. हु एंटर्ड फर्स्ट, फर्स्ट कम. दैट मीन्स द फर्स्ट पर्सन हु टेक फैसिलिटी विल बी दिस लेडी विद दीज बुक्स. ये सेकंड नंबर पे है तो इसको सेकंड नंबर पे एंटरटेन किया जाएगा. थर्ड एंड फोर्थ, दैट मीन्स द सीक्वेंस ऑफ, सपोज वी आर एज्यूमिंग दैम एज अ 4 प्रोसेसेस, P1, P2, P3, P4. So as per rule, the rule is saying that first come first serve. That means this is the first process which entered first will be entertained first. It will get services first. सेकेंड नंबर पे इसको सर्विस प्रोवाइड होगी. फिर जैसे ये एग्जिट कर जाएगा इसको सर्विस प्रोवाइड होगी और उसके बाद फोर्थ नंबर पे इस पर्सन की टर्न आएगी जो लास्ट में है. दिस इज प्योरली ऑफ टाइप नॉन प्रीएम्प्टिव. अब ये बात आती है कि व्हाट इज नॉन प्रीएम्प्टिव. नॉन प्रीएम्प्टिव आर दोज टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जिनको एक बार सीपीयू एलोकेट हो गया टिल इट्स कंप्लीशन सीपीयू, that process will hold CPU. Suppose P1, this is the first process, P1 is getting CPU first. तो जब तक ये अपना पूरा वर्क कंप्लीट करके एग्जिट नहीं कर जाती तब तक CPU नेक्स्ट प्रोसेस को एलोकेट नहीं करेगा होगा. सेम इज़ द केस एप्लीकेबल ऑन प्रोसेस 2. जब तक प्रोसेस 2 की कंप्लीशन नहीं हो जाती तब तक प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस 3 को एलोकेट नहीं होगा. दीज टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स आर कॉल्ड नॉन प्रीएम्प्टिव. मैन दैट मीन्स देयर इज नो प्रीएम्प्शन ऑफ CPU while execution is running. Now we are taking a simple example of I have 4 processes. Suppose the completion time to complete this process is suppose 7. That means 7 time unit is the time taken by this lady, which we are calling as process 1 for its completion. Process 2 is taking 3 milliseconds for its completion. Process number 3 which is taking 5 milliseconds for performing its job, and P4 is taking 2 milliseconds. So the question is basically looks like this. Process 1 is taking, मतलब टिकट विंडो पे या इस विंडो पे वो कितनी देर ले रहा है फॉर इट्स कंप्लीशन इज 7 milliseconds. और प्रोसेस 2 कितनी देर ले रही है 3. So this is the burst time. Burst time is the time taken by every process for its completion. कितनी देर इसकी जर्नी चलेगी, दैट इज द बर्स्ट टाइम ऑफ एवरी प्रोसेस. नाउ I'll take this example.
and we will try to solve this question using first come first serve, as there is no time mentions which is related to arrival time. Arrival time वो time जब आपकी process जो है वो ready queue में enter करती है, but in this question I am not taking arrival time. In the next question I will take arrival time. तो burst time is the time taken by the process for its completion. तो अब ड्यूटी है किसकी? Right now the algorithm who is used here is first come first serve. That means the job which entered first will be entertained first. So we are making a Gantt chart or a bar chart which is telling the sequence of execution as well as the time taken by every process till its completion. That means suppose we are taking that all these processes are present in the ready queue जब हमने allocation start करी. That means we are assuming that all the processes are in the queue when the execution start. That means their arrival time is mainly 0. तो 0 पे process 1 को हमने start कर दिया because this is the first process in the queue, P1, and it's taking how much time? Burst time मतलब कितनी देर ये execute होगी. The burst time of this process is what? 7. Now it will complete its journey at time unit 7. Done. Now process 2 is now the next process is process number 2, and it's taking how much time? Burst time of this process is 3. So 7 plus 3 it's 10. Next process is P3 and its burst time is what? 5. So 10 plus 5 it's 15. The last process is P4 and it's taking how much time? Its burst time is 2. So 15 plus 2 it's 17. When we are taking that, the initial value is 0 and we are taking the sum of all these values, 7 plus 3, 10 plus 5, 15 plus 2, 17. The last value which people will get on the Gantt chart is 17. That means currently your question is correct. We are solving question correctly. Now there are two things which we will find. First is turnaround time of all these processes, and second is waiting time of all these processes. Now first discussion revolves around what is turnaround time and what is waiting time. There are some formulas associated to find the turnaround time and waiting time of any process. So first of all we will discuss the waiting time. There is a formula to calculate waiting time. Waiting time is turnaround time. TAT stands for turnaround time minus burst time. The time mentioned here. Burst time is also called as CPU cycle. कई जगह पे क्वेश्चंस में लिखा होगा CPU cycle. CPU cycle मतलब the time taken by the job while its execution on CPU. Next is turnaround time. The second formula is associated with turnaround time. Turnaround time is burst time plus waiting time. You can use it. The another formula is exit time. Exit time जब ये complete होके बाहर निकल जाती है, that is the exit time of that process minus arrival time. Arrival time is the time when process entered in a ready queue for its execution. That means it's ready to execute. That time of the process is called arrival time. Done. Now first of all, this is the Gantt chart. From this Gantt chart we will find the turnaround time and waiting time of all these processes. The first process here is P1. So we will concentrate on the cell where P1 is mentioned. So P1 is mentioned here. Now as there is no arrival time mentioned in the question, so we will consider arrival time as 0. So the best way to find out waiting time in first come first serve scheduling algorithm is, first of all, concentrate on the bar.
where that process is written, and see the left corner of that cell. The left corner is saying that 0. That means the waiting time of process 1 is 0. And now see the right corner of that process on the Gantt chart. Right corner is saying that 7. So 7 is the turnaround time. Turnaround time means when the process completed its journey and exit the system, that very time is called turnaround time. Next is, now the next process is P2. P2, the bar on the Gantt chart, this is the cell which is where P2 is mentioned. तो P2 के ऊपर concentrate करें. The left corner of P2 is, that is the time when it start executing. तो कितनी देर वेट करा इसने, ये वाला पूरा टाइम लिमिट इसने कितना करा, वेट करा. इट्स स्टेइंग इन रेडी क्यू इन वेटिंग स्टेज. तो वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस नंबर 2 इज 7. और कब ये एग्जिट हो गई कंप्लीट होके, 7 + 3 इट्स 10. क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखो तो बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम इज व्हाट, टर्न अराउंड टाइम. एंड सेम आई एम डूइंग द सेम थिंग. एग्जिट टाइम को देखो तो 10 है यहाँ के एग्जिट टाइम, एंड अराइवल टाइम इज वी आर एज्यूमिंग 0. तो 10 - 0 इट्स 10. तो बेस्ड ऑन फॉर्मूला और बेस्ड ऑन दिस सिंपल लॉजिक यू कैन कैलकुलेट. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज P3. सी द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ P3. P3 waiting time of P3 is 10, and see the right corner 15. Turnaround time of the process is 15. Now the next process, which is the last process, is P4. See the right corner. Right corner will tell turnaround time 17, and this is the left corner. Left corner will tell what, waiting time. But this is the condition, arrival time is 0. अदरवाइज अगर अराइवल टाइम इज गिवन इन द क्वेश्चन तो हमें अराइवल टाइम को माइनस करना पड़ेगा एग्जैक्ट टाइम से, बिकॉज वी आर इज्यूमिंग दैट अराइवल टाइम इज 0. तो एवरी टाइम द आंसर विल बी दिस. नाउ वी आर रिप्लेसिंग दिस क्वेश्चन विद लिटिल मोर. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इन दिस क्वेश्चन वी आर बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग सम अराइवल टाइम टू एवरी प्रोसेस. देर इज़ अ लिटल चेंज इन द क्वेश्चन. तो हम इस केस में क्या कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द क्वेश्चन विद द अराइवल टाइम. तो आई एम कीपिंग इट हेयर. तो इन द सेकेंड क्वेश्चन, if the question is this, then what will be the Gantt chart? The total processes are same. First of all, we will check that whether these processes are written in the increasing order of their arrival time. In certain questions ऐसा हो सकता है shuffled हो, यहाँ पे 0 लिखा हो, यहाँ पे 3 लिखा हो. तो हमने पहले sequence करना है सेट कि किस sequence में these processes entered in the ready queue. अब इसी को हम पिक्चर के साथ assume करने की कोशिश करते हैं. हम यहाँ पे कहते हैं कि जब आपका ये वाला लेडी यहाँ पे एंटर करा इन द क्यू, द टाइम ऑन द वॉच वॉज 0. जैसे ये पर्सन एंटर करा तो टाइम कितना हो गया, 3. और जब ये लेडी एंटर करी तो दैट द टाइम ऑन द वॉच वॉज 5. इन एनी टाइम यूनिट, इट्स मिली सेकेंड्स और इन सेकेंड्स और इन मिनट्स, I am assuming that the time unit at that particular moment is 0. Suppose it's 0 second, it's 3 second, and the time unit at here is 5 seconds, and the now this is 5 second 6 second. तो हमारा अगर सीक्वेंस अब मैनेज होगा तो सीक्वेंस क्यू का कैसे मैनेज होगा कि सबसे पहले ये आई थी तो इसको एंटरटेन किया जाए, और सबसे लास्ट में ये पर्सन एंटर करा था तो इसको एंटरटेन करा जाए. अगर शफल्ड फॉर्म में होता तो पहले ड्यूटी है हमारी कि हम उसको एज्यूम करें कि कीप इट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो कि हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो. अब जो भी कैलकुलेशंस होंगी वेटिंग टाइम की या टर्न अराउंड टाइम की, इसके अराइवल टाइम पे डिपेंडेंट होंगी. वो कैसे, वो देखते हैं. So the very first process which entered in the queue is P1. When it enters, arrival time is what? 0. हम 0 पे क्यू में लग गए, ठीक है. और जितनी देर हमें काम करने को चाहिए थी वो कितने टाइम यूनिट था, 7. तो हम लोगों ने 7 पे अपना टाइम ख़त्म किया और निकल गए CPU से. सेकेंड प्रोसेस इज व्हाट इन द क्यू,
क्योंकि 0 के बाद कौन सा टाइम यूनिट आता है 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो नेक्स्ट प्रोसेस हु एंटर्ड इन द रेडी क्यू इज P2, and the execution time of this process is same as the previous question, it's 10. The whole diagram will stay same. Next process is P3, whose execution time is what? 5, same. And the next process is P4, whose execution time is what? 2. If you will see the questions, the solution of both the question's solution is same, but there will be the change in the waiting time of both the questions. Now we will see what is the difference in the solution. So I am assuming this question, so I will keep this question here. Now we will try to calculate the turnaround time and waiting time of both the processes. It's on you. You can calculate with the formula. Formula is given here. The answer will be exactly same. If you people are feeling some issues while calculating the solution with the help of this formula, you can comment me. But I am just trying to tell you the logic behind that. Formula is easy. You can easily calculate. But first of all, understand the logic. Now first process is P1. It start its execution at what time unit? 0. और ये enter कब करी थी? 0 पे ही एंटर करी थी. तो क्या इसने वेट करा? नेचुरली देखा जाए तो इसने कोई वेट नहीं करा. जैसे ये रेडी क्यू में एंटर करी वैसे ही इसको CPU एलोकेट हो गया. तो वेटिंग टाइम ऑफ दिस प्रोसेस, लेफ्ट कॉर्नर था ना हमारा 0, 0 माइनस 0, 0, 0 माइनस अराइवल टाइम. नाउ व्हेन इट एग्जिट द सिस्टम 7 पे, 7 पे इसने CPU छोड़ दिया. 7 माइनस 0, यहाँ पे भी लिखा है ना एग्जैक्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 7 इज इट्स टर्न अराउंड टाइम. अब प्रोसेस 2, व्हेन प्रोसेस 2 स्टार्ट इट्स जर्नी एट 7, डन. लेफ्ट कॉर्नर देखो 7. एंड व्हेन इट एंटर्स इन द क्यू, रेडी क्यू में कब एंटर करी? 3 पे. हम 3 बजे लगे और 7 बजे एग्जिट कर गए. तो कितनी देर हमने वेट करा? 7 पे हमें CPU मिल गया, तो हमने कितनी देर वेट करा? सिर्फ एक 4 मिली सेकेंड टाइम यूनिट ऐसा था जिस टाइम के लिए हमने वेट करा, क्योंकि हम 3 बजे पहुंचे थे, 7 बजे हमें टिकट मिल गई, तो 4 घंटे वेट करा ना. नेक्स्ट इज सी द राइट कॉर्नर 10 एंड इट्स अराइवल टाइम. टर्न अराउंड टाइम इज एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम. नेक्स्ट इज in case of process 3, the answer is what? See the left corner 10 and see the right corner and right here in turnaround time 15 minus, in both the cases write the arrival time. 10 o'clock पे वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर गई और 5 o'clock पे वो एंटर करी थी, तो 5 टाइम यूनिट उसने वेट करा. नेक्स्ट इज see, now this is P4. See the left corner of P4 15 and right corner 17 and arrival time. So this is the answer. Now you can easily understand the difference when the Gantt chart in both the cases is same, but there is a huge difference between the turnaround time and waiting time of both the jobs. Here it's well understood that turnaround time, waiting time depends on the arrival time. अब अगर इस क्वेश्चन से हम कंपेयर करें, वेटिंग टाइम को हम ट्राई करें, वेटिंग टाइम यहाँ पे हमारे पास क्या है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. तो टर्न अराउंड टाइम, दिस इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. 7 minus 7 it's 0, 7 minus 3 it's 4, 10 minus 5 it's 5, 11 minus 2 it's 9. So from formulas you can also easily calculate the answers, but this is the logic behind both waiting time and turnaround time. Thank you for watching this video. If you people are facing any issue, then you can easily comment me on my comment box. Thank you.